بسم الله الرحمن الرحيم. بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي، فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييته تعصيني ولا تخشى من العتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. पनाह मांगता हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद की। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। कसम है सूरज की और उसकी धूप की और चाँद की जब वो उसके पीछे चले, और दिन की जब वो उसे रोशन करे, और रात की जब वो उसे छुपा ले, और आसमान की और जैसे उसने उसे बनाया, और ज़मीन की और जैसे उसने उसे फैलाया, और नफ्से इंसानी की और जैसे उसने उसे दुरुस्त किया। फिर समझ दी उसको उसकी बदकारी और परहेजगारी की। बेशक वो फलाह पा गया जिसने अपने नफ्स को पाक रखा, और बेशक वो नामुराद हो गया जिसने उसे खाक में मिलाया। समूद ने अपनी सरकशी के सबब झुटलाया। जब उनका निहायत बदबख्त उठा तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और उसकी पानी पीने की बारी से ख़बरदार रहो। तो उनके रब ने उनके गुनाह के सबब से उनको हलाक कर डाला, फिर उस बस्ती को बराबर कर दिया और वो इसके अंजाम से नहीं डरता। In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. By the sun and its brightness, and by the moon when it follows it, and by the day when it displays it, and by the night when it covers it, and by the sky and he who constructed it, and by the earth and who spread it, and by the soul and he who proportioned it and inspired it with its wickedness and righteousness. He has succeeded who purifies it, and he has failed who instills it with corruption. Thamud denied their prophet by the reason of their transgression. When the most wrecked of them was sent forth, Allah's messenger said to them, "Don't harm the she-camel of Allah or prevent it from its drink." But they denied him and hamstrung her. So their Lord brought down upon them destruction of their sins and leveled it upon all of them, and he does not fear its consequences thereof.
قد أفلح من زكاها. We were born pure, innocent, untainted by the world. Our story began with laughter, merriment, and delight beyond expression. As we grow, the world around us began to cast its shadows, polluting the pristine canvas of our heart. With the changing seasons, storms unhoped for, we often find ourselves surrendering to the voices of evil within us and outside. Our core, once radiant, starts to darken. Our souls tarnished, our hearts corroded. And so we feel rusted, diseased, depressed, brainwashed, arrogant, addicted to dunya, shallow. Somewhere along the road, some hearts become so cold they freeze to death. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Amid the chaos, confusion and madness, rise the successful, who have hearts of gold, who have Allah, the Most High, in their hearts and soul, surrendering completely to their Lord, Aslamtu li Rabbil Alameen, embodying the beautiful character of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, in a constant pursuit of self-growth, leaving impactful footprints of positivity while attaining the pleasure of their Lord. And this is the success, the ultimate success, to win the battle within. بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييته تعصيني ولا تخشى من العتب. In Islam's warm embrace, we start on Tazkiyah's path, a journey of the heart. The vessel qalb seeks a pure reflection. Tazkiyah's effort beyond worldly affections. In heart's chamber, shadows may appear, diseases lurk, whisper. We should fear envy and pride like a silent dart, ailing the heart, tearing it apart. Patience, a fortress against the storms we face. Generosity and kindness, spreading grace. Forgiveness, a bridge to mend what's torn. Humility,
where hearts are born. In Quran's verses, a beauty divine, each line a timeless radiant sign, with Allah's grace and Tazkiyah of heart. May we find our peace and bloom where serenity imparts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected parents, teachers, chief guest, and guest of honor, my name is Mustafa Ashraf. And my name is Muhammad Yahya. We're thrilled to welcome you all to the most epic event of the year, the Al Huda International School annual show that promises to bring nothing short of extraordinary. Absolutely, Yahya. Before we jump into the main part of our program, let's discuss the special theme that will run through today's performances. It's something very strong, deep, and wonderfully simple. Tazkiyah. Tazkiyah indeed. It's not just a word. It's an ongoing journey, a process of internal purification that guides every step of our lives. Imagine this, everyone. Life resembles a canvas, and Tazkiyah serves as the brush, delicately molding and enhancing our character. It's not a one-time event, but an ongoing dedication to improve ourselves in every way. Just like the vibrant color on canvas, Tazkiyah adds depth and richness to our lives, striving for excellence, nurturing kindness, and embodying the true essence of Islam. Today, our talented performers will guide you on a journey filled with self-reflection, enlightenment, and of course, entertainment. From our thought-provoking performances to poetry that stirs the soul, each act contributes to the masterpiece of Tazkiyah. Our annual day's goal is solely dawah. This nasheed isn't just any nasheed. It's being truthful, strong, and having a determined spirit, just like what's in every Muslim's heart. Brothers and sisters, get ready to hear the wonderful voices of our grade 3A friends. They're about to share a beautiful nasheed called Heart of a Muslim. A warm welcome to grade 3A as they take us on a happy journey, making our heart feel good with the nasheed Heart of a Muslim. Looking up at the sky, searching for the Most High. He rejected the way of worshipping gods of clay. Prophet Ibrahim knew that Allah was near, and that the heart of a Muslim is sincere. Under the hot-burning sun, he declared God is one. Though with stones on his chest, his iman would not rest. The Mu'adhin knew that right will conquer wrong, and the heart of a Muslim must be strong. It's the heart of a Muslim through the guidance of Islam that makes you fair and kind and helpful to your fellow man. So living as a Muslim means that you must play a part. Allah looks not at how you look, but what is in your heart. In a poor, meager state, little food on a plate, Mother said she was glad, always sharing what we had. When I asked how can we share what's not enough, she said the heart of a Muslim's filled with love.
He said it's time you should know. You will learn as you grow that some people around will do what's bad to bring you down. Father said to be a star that's shining bright. For the heart of a Muslim does what's right. It's the heart of a Muslim through the guidance of Islam that makes you fair and kind and helpful to your fellow man. So living as a Muslim means that you must play a part. Allah looks not at how you look, but what is in your heart. So whatever you do, make sure your words are true. Honesty is the best, because life is a test. Even if it hurts so much you want to cry. For the heart of a Muslim does not lie. It's the heart of a Muslim through the guidance of Islam that makes you fair and kind and helpful to your fellow man. So living as a Muslim means that you must play a part. Allah looks not at how you look, but what is in your heart. So living as a Muslim means that you must play a part. Allah looks not at how you look, but what is in your heart. Subhanallah, what an incredible performance. Now, dear guests, get ready to be touched by grade 2B's delightful performance titled Healing Hearts. This performance is more than just a skit. It is a journey into our own hearts. Our goal today is to inspire young and old to think about how we can use the valuable teachings of Quran and Sunnah to improve our behavior. Healing Hearts reminds us that the Quran and Sunnah provides timeless wisdom. It is a soothing remedy for our souls. While these young performers share their thoughts, let's each take a moment to think about how can we become better individuals. Let the important message of Healing Hearts resonate with you as grade 2B takes us on a journey of learning and growing. कोई है देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है प्लीज अब्बू हौसला करें मैं अपने डॉक्टर को बुलाता हूँ प्लीज डॉक्टर को बुलाएं हमारे मरीज की हालत बहुत खराब हो रही है जल्दी करें जल्दी अच्छा बुलाती हूँ हौसला रखो शोर मत करिए हॉस्पिटल है Doctor, we have an emergency. Please hurry up. जी बताइए, आपके मरीज को क्या हुआ है? इसे शदीद बेचैनी है. Oh my God! Look at his heart. How dirty it is. आपने कब से इसकी दिल की सफाई नहीं की? दिल की सफाई वो क्या होती है? Nurse, please take his vital signs, measures of sugar, blood pressure and temperature. Okay, sir. Doctor, please tell us what happened to our patient. You people can stay out. His condition is very critical. Let us take the diagnosis. Oh my God! His heart is bombarded with a lot of heart illnesses. This is such a serious matter. Oh, I see something dangerous. मैं हसद हूँ. मैं इसके दिल को सया करता हूँ.
किसी के पास नेमत देखकर मैं उसको खुश नहीं रहने देता। हा 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 हा। मैं तकब्बुर हूँ। मैं इसको हर वक्त ये एहसास दिलाता हूँ कि ये सबसे बेहतर है। इब्लीस को भी मैंने ही बेवकूफ़ बनाया। मैं गिबत हूँ। I enjoy his company a lot. ये जब दूसरों की बुराइयां करता रहता है तो मुझे बहुत मजा आता है। हा 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 हा। मैं झूठ हूँ। मेरे बगैर तो ये दिल उदास हो जाता है। और मजे की बात, झूठ बोल बोल के भी हम कभी पकड़े नहीं जाते। हा 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 हा। मैं इसराफ हूँ। मैं इसके सारे पैसे खर्च करता हूँ। इसको महंगे कपड़े और महंगे जूते लेने पर मजबूर करता हूँ। हम सब ने मिलकर इसके दिल को बीमार कर दिया है। हा 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 हा। Sir, his condition is very critical. Kindly guide us for his treatment. What is your diagnosis about it? Sir, I think हसद तकब्बुर borderline cross कर चुके हैं. I think this is not a physical disease. This is something deeper. We discussed this with a spiritual cardiologist. अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसे नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो. We should seek guidance from teaching of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. हमें कुरान और अहदीस में दिलों की बीमारियों के बहुत से इलाज मिलते हैं. I think we shouldn't waste our time. Let's go and start his treatment. Nurse, please bring the injection of tawakkul for Hasad. हूँ और मैं हसद का इलाज हूँ. मेरे बगैर एक मोमिन का दिल खाली मकान है. इसके दिल को मैं जिंदगी देता हूँ. Nurse, please bring the drip of ajizi for takabbur. मैं आजिज़ी हूँ. अल्लाहु अकबर. इस दिल में कितना ज़्यादा तकब्बुर है. लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं किसी के दिल में आती हूँ तो वहाँ से तकब्बुर भाग जाता है. Nurse, please bring the capsule of istighfar for ghibat. मैं इस्तिग़फ़ार हूँ. इस्तिग़फ़ार करने से दिल साफ हो जाता है. दिल की सफाई के लिए ज़रूरी है. मैं ग़ीबत को निकाल कर बाहर फेंक देता हूँ. Nurse, please bring the tablets of such. मेरा नाम सच है और मैं सबसे मुश्किल काम हूँ. और एक बार किसी को मेरी आदत पड़ जाए तो उसके लिए सच बोलना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता. Nurse, please bring the syrup of atadal for israf. मेरा नाम एतदाल है. मैं यहाँ इसराफ का इलाज करने आई हूँ. Balance brings contentment to the life. डॉक्टर, मुझे लग रहा है मेरे दिल की धड़कन नॉर्मल हो रही है. Allah loves those who rely upon Him. May your heart be enlightened with the love of Allah. Alhamdulillah, his heart is changing, but cleaning of heart is not a one-time process. It is constant struggle throughout our life.
Doctor, I think we should make all of these remedies part of his life. The day we stop putting effort to clean our hearts, Shaitan will come and misguide us. This cure is remarkable. The heart is cleansing. Now he is much better. Please call his family members so that we could tell about medication. I think we shouldn't waste our time. आपका मरीज अब ठीक है, लेकिन याद रखें, अगर ये दवा नहीं लेगा तो किसी भी वक्त दिल की हालत दोबारा खराब हो सकती है. Please get a checkup of Tazkiyah on weekly basis and self-analysis. It will help your heart to stay healthy and active. May Allah give you shifa. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذا ما قال لي ربي أما استحييت Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, I see. You hungry for the good deeds today? No, I didn't do anything. Hey, you already named a lot of good deeds by saying salam with a beautiful smile. Someone asked the Prophet ﷺ, what is the best thing in Islam? He said, feeding others and giving the greeting of salam and smiling is sunnah. I didn't realize. Alhamdulillah. Outstanding performance, MashaAllah. We all pray that Allah heals our hearts and fills it with nur. It reminds me of dua that our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to recite. May Allah place light in my heart, in my eyesight, and in my hearing. Ameen. Indeed, it's a beautiful dua. Now, dear friends, get ready for our heartfelt act. Our tiny stars of Junior Montessori Casa C will present Dua Noor. Allahumma ja'al fi qalbi noora. Allahumma ja'al fi qalbi noora. Wa fi basari noora. Wa fi basari noora. Wa fi sam'i noora. Wa fi sam'i noora. Wa an yamini noora. Wa an yasari noora. Wa an yamini noora. Wa an yasari noora. Wa fawqi noora. Wa tahti noora. وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا واجعل
रात के 9 बज रहे हैं। मैं देखता हूँ मेरा निकम्मा बेटा क्या कर रहा है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी। ये बच गया। भाई अगर आप कुछ पढ़ लेते तो आपको कुछ फायदा हो जाता। भाई अभी बाबा तो नहीं देख रहे पर अल्लाह ताला देख रहे हैं। आओ साथ मिलकर पढ़ते हैं। माशा अल्लाह, बहुत खूब। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, हमारी अगली परफॉर्मेंस बहादुरी, अज़मत और तक़वा की आला मिसाल है। बिल्कुल मुस्तफ़ा, आज हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की बेमिसाल कहानी सुनेंगे। इनकी कहानी से हमें पता चलता है कि असल मजबूती सिर्फ जिस्मानी और ज़हनी नहीं बल्कि अपने किरदार की होती है। यकीनन सलाहुद्दीन अय्यूबी वो अजीम लीडर थे जिन्होंने 12वीं सदी में बैतुल मक़दिस फतह किया। लेकिन जो चीज़ इन्हें बिल्कुल अलग और नुमाया बनाती है, इनकी फौज की फतवात के अलावा इनकी दिल की मजबूती थी, इनकी ईमान और तक़वा की ताकत है। तक़वा का जज्बा एक ऐसा शोला है जो हमारे अंदर नेक अमाल पैदा करता है। जितना मजबूत इस जज्बे का शोला होगा उतना ही ज़्यादा हम अपना तज़किया कर सकेंगे। हमारे आज के परफॉर्मर्स बहुत मेहनत से आपके लिए पैगाम एक कहानी की सूरत में लेकर आए हैं। तो किसी ताखीर के बगैर आइए चलते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की दुनिया में। इन अय्यूबी की तरबियत आपकी वालिदा ने बड़े ख़ास अंदाज में की। दीन के इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म में भी महारत हासिल की। इनके उस्ताद ने इनको नेज़ाबाजी, तलवारबाजी और दीगर जंगी आलात चलाने की ख़ास तरबियत दी, जिसमें इनको ख़ास अबूर हासिल हुआ। सलाहुद्दीन की इन सलाहियतों के मोतरफ उनके उस्ताद भी थे। बिलाशुबा आप एक निडर, बहादुर और हिम्मत वाले इंसान थे। आपकी वालिदा ने आपकी परवरिश खालिस इस्लामी खतूत पर की। ऐ मेरे बहादुर शागिर्द, उठ और दुनिया को दिखा दे कि तू एक बेमिसाल सिपाही है। तूने ही उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद करना है। शाबाश मर्द मुजाहिद। मुसलमानों को ऐसे ही दलेर और बाहिम्मत सिपाहियों की जरूरत है जो दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़े। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। ए हमारे बहादुर सिपाही, मिस्र की फतह मुबारक हो आपको। आपने बेशक एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक ये अल्लाह की मेहरबानी है जिससे हमें ये सलाहियत बख्शी और दुश्मनों को नीस्त व नाबूद करने की ताकत अता फरमाई। हम इस रब के बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाशुबा आपकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज दुश्मन ने अपने मुंह की खाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आलीजा, अल्लाह की नुसरत और भरोसे से उम्मत मुसलमान दीन का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक ले जाएगी। आज से हम आपको अपनी फौज का सिपा सलार मुंतखब करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी ख्वाहिशात पर पूरा उतरें। आज अल्लाह की ताईद और नुसरत से हमने बैतुल मक़दिस और आलम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करके
मुसलमानों के खोए वकार और अजमत को दोबारा बहाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये शिकस्त रहती दुनिया तक याद रहेगी। हर मुसलमान के दिल में जज्बा जहाद और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और हुर्मत का ख्याल अपनी जान से भरकर होता है। अजीम सिपाहसालार, तेरी अजमत को हम सलाम पेश करते हैं। आपका जज्बा जहाद काबिल तारीफ है। हम ये बैतुल मक़दस की चाबियां आपको पेश करते हैं। आज मुस्लिम माशरा फिर ज़वाल पजीर है। हर जगह मुसलमान ज़ुल्म व सितम का शिकार हैं। हर तरफ अफरा तफरी और इंतशार का आलम है। मुसलमान कौम को फिर से सलाहुद्दीन की ज़रूरत है। हर मुसलमान के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा जज्बा जहाद और बहादुरी दरकार है। ए उम्मत मुसलमान, क्या ये तू है बेबस और लाचार, जलील और ख्वार, दुश्मन के अक़वाम के आगे सर निगू? आज तेरी तादाद ज्यादा है, लेकिन तेरा रोब समंदर की झाग से भी कम है। आज का मुसलमान सिर्फ अपने मफाद का पुजारी है। इसी वजह से तुझ पर गैर मुस्लिम का गालबा है। ए उम्मत मुसलमान जाग, ए सोई हुई कौम जाग। क्या तुझे अपने असलाफ की अजमतें याद नहीं कि किस तरह उन्होंने काफिरों को शिकस्त देकर अल्लाह का नाम बुलंद किया था? काश हमारे अंदर भी कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी, यूशा बिन नून, अब्दुल गाजी, तारिक बिन ज़ियाद होता तो आज इस कौम का यह हाल ना होता। लेकिन मैं अपनी कौम से मायूस नहीं हूँ। मुझे आप सब में सलाहुद्दीन नजर आ रहा है। हाँ, आप भी हो सकते हैं अर्तुगरुल। हाँ, आप भी हो सकते हैं तारिक बिन ज़ियाद, आप भी हो सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम। हाँ, आप भी हो सकते हैं उस्मान। ये भी, वो भी, आप भी, आप भी। बस अपने अक़दार और रवायात को याद रखने की जरूरत है। कुरान को हर दिल और हर हाथ में बसाना होगा, तभी तो आज उम्मत मुसलमान नाकाबिल तस्खीर कौम बन सकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह सुभान अल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना सुभान अल्लाह मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु सुभान अल्लाह व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु सुभान अन्न अल्लाह सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O believers, when the call to prayer is made on Friday, then proceed diligently to the remembrance of Allah and leave off your business. That is the best for you, only if you knew. Outstanding performance, mashallah. Now, dear guests, let's lighten the environment. Get ready for an adorable and catchy performance by our youngest stars of Junior Montessori Casa A. They're bringing us a delightful nasheed called Pizza in the Pocket. Indeed, in this fun and creative performances, our little ones will show us how taking care of ourselves is like finding a balance. Looking after ourselves means taking care of our bodies and also looking after our inner selves. So let's all enjoy the infectious joy of Junior Montessori Casa A as they're bringing us Pizza in the Pocket, reminding us that self-care can indeed be a delightful and well-balanced treat. Did you ever hear about the boy who ate and ate and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he
ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate dates in Damascus, which he thought were very nice. Hot samosas in Sumatra, seasoned with the special spice. He had tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain, and a bowl of fresh baklava that he bottled in Bahrain. He said gyros made in Cairo are a taste that can't be beat, and the lemonade in Yemen made a very special treat. But the turkey made in Turkey could still use a pinch of salt. If you ever visit Malta, you should have a chocolate malt. He had pizza in his pocket, he had ketchup on his shirt, and he put in ice cream sundae so he wouldn't miss dessert. He had pizza in his pocket, he had ketchup on his shirt, and he put in ice cream sundae so he wouldn't miss dessert. On a bay in the Bahamas, he had bonbons in a bunch. Then he rushed back home so he could make it just in time for lunch. Then one day he saw a little girl who held her tummy tight, and he walked over and asked her, "Is everything alright?" She said she was so hungry, been hungry for so long. Then he realized the way he ate was very, very wrong. He looked down at his own tummy and he started feeling pain from eating too much food, but he knew not to complain. So he brought the girl some food, shared it with her family. Then they thanked Allah for what they had, and then he let them be. So let's try to learn a lesson, and let's try to do what's right. Eat the food your parents give you without a fuss or fight. Always be thankful to Allah for all your yummy food. Share what you have with others, 'cause not sharing is rude. Being thankful is what's really great. Eat the veggies on your plate and don't be like the boy who ate and ate and ate. He had pizza in his pocket, he had ketchup on his shirt, and he put in ice cream sundae so he wouldn't miss dessert. Yes, a pizza in his pocket and ketchup on his shirt, and he put in ice cream sundae so he wouldn't miss dessert. Being thankful is what's really great. Eat the veggies on your plate and don't be like the boy who ate and ate and ate. خجلي إذا ما قال لي ربي. Have you ever thought why we're here in this world? What is our goal and why doing good matters? Well, get ready for a thoughtful play by Advanced Montessori Kaza I called The Growing Garden. Imagine a special garden where every good thing we do is like planting a seed, and every day we mean to do something good. It's like the soil where the seed can grow. The Growing Garden is like a journey to find out more about ourselves. It's like every good thing we do is like taking a step toward a wonderful paradise. Now, get ready to be inspired by our young stars of Advanced Montessori Kaza I. आप बहुत खूबसूरत और मजबूत है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मजबूत हूँ। आप इतने मजबूत कैसे हैं? क्योंकि मैं अल्लाह को राज़ी करता हूँ। जब अल्लाह मुझसे खुश होता है तो मुझे ज़्यादा पते देते हैं। आए मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा था। इस दरख्त के पत्ते क्यों
अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी नहीं कर रहा था, लेकिन अगर वो अस्तगफिरुल्लाह कहे और अच्छे काम करे तो वो मेरी तरह हरा भरा हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान है। पैसा मैं सदका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से हरा भरा हो गया। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। गाजर कितने किलो लगाई? 150 रुपए किलो। उफ, इतनी महंगी। और मटर का क्या रेट है? 200 रुपए किलो। अल्लाह अल्लाह, क्या जमाना आ गया है। महंगाई है महंगाई। रहना ही दो भाई, इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन ये गाजर तो बड़े मजे की है। सब्जी खरीदते वक्त मुफ्त में गाजर उठा के खाने से विटामिन बी और सी के साथ साथ मुफ्त गुना भी मिलता है। Subhanallah, what an amazing performance. Now it's time for an interesting podcast brought to you by grade 5A girls. They're about to discuss something really important, the significance of keeping our heart pure. This talk show isn't just another talk. It's about sharing valuable thoughts on having clean and kind hearts. So let's all listen and learn from our young experts. Without further ado, let's welcome grade 5A girls to the stage for their insightful talk show about the significance of cleaning our hearts. Assalamu alaikum, dear viewers. We hope that everyone is doing well and is in the best of their health and iman. Today, my friends and I have a very interesting and thought-provoking session for all of you. Walaikum assalam, Fabiha. Yes, indeed.
First, I would like to introduce our main guest of the day, Dr. Haifa Yunus and Ustaza Temia, who are renowned Islamic scholars. Assalamu alaikum and welcome to our humble show. So like Fabi has said, we're gathered here to discuss a topic that is very important when it comes to our religion, Islam. Yet, as time passes, people seem to have forgotten the significance it has on our lives, individually as well as collectively. Exactly, Ramin. In order to educate ourselves and the youth of the world, we are here to have a talk with our esteemed guest about Tazkiyah, what it is, how to achieve it, and what steps need to be taken to maintain it. We're really glad to be here and to see such youngsters taking an interest in their religion sincerely to better themselves. If we look at the broader meaning of Tazkiyah, it is to study oneself, remove what is bad, and replace it with good. So it's like a process to cleanse or purify ourselves. But how can we begin this process, Ustaza? The process begins with our heart. You need to have the will to remove all that's bad in your heart to achieve Tazkiyah. What I seem to understand from this, Tazkiyah has to do a lot with our hearts. Both Dr. Haifa and Ustaza Temia keep referring to it. That's a very interesting point you have made, Abira. Isn't it true that the heart has been mentioned in many occasions in the Holy Quran? That's very true. There are many verses in the Quran that mention the heart of a moment. That is why Tazkiyah also starts with our hearts. That's why we should focus on our hearts so that we aren't blind to Allah's will. Subhanallah. Indeed, we need to learn how to purify our heart to prosper in the eyes of Allah. Dr. Haifa, how do you think we should start to cleanse our hearts? To me personally, the heart is like a crystal vase that is a shining beauty. As we live our lives, this vase becomes foggier and dirtier as time passes. One might ask, what is that dirt? It's anger, jealousy, attachment to the dunya, and all bad thoughts and actions done in hurting others. Whatever negativity is in the heart makes it easy for the shine to fade. Exactly. I agree with Dr. Haifa. Cleaning the heart from this dirt and bringing back its shine is the basically process which begins Tazkiyah. Subhanallah. Ustaza, how can we actively begin this journey of Tazkiyah? What are the steps? My dear, Tazkiyah begins by first developing and strengthening one's own connection with Allah. This is done by ensuring you offer your first salah on time, recite the Holy Quran, but not just for the purpose of reciting, but to understand it and implement it into your lives. Focus on the connection with your Creator. Once that is achieved, focus on the relations around you. Well said, Sister Taimia. Once a person has achieved a connection by putting effort into communicating with Allah, the next step that is taken is to begin identifying the problem the individual is facing. After knowing the disease, can we cure ourselves from it? Well said. Even doctors have to first diagnose a patient before they give medication for fighting any disease. We have a caller on the line. Let's see what they have to say. Assalamu alaikum. My name is Ayat Furqan. I have a question for the guest regarding Tazkiyah. I want to implement it in my life but don't know where to get started. What should our first steps be? Jazakallah for your time. Wa alaikum assalam. Jazakallahu khair for your phone call, dear Ayat. Ustaza, if you could shed some light on her question. Barakallah for your inquiry. Ibn Qayyim has answered this in a beautiful way. He says, do these three things less in your life. Eat less, talk less, and sleep less. Do more of the following, zikr-e-ilahi. These habits will become the cleaning agents to achieving Tazkiyah.
Dr. Haifa, what does the Holy Prophet ﷺ say about cleansing the heart of a moment? Well, in one of the narrations, the Holy Prophet ﷺ says, recite the following dua to gain tazkiyah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. O Allah, give piety to my soul and purify it. You alone are best to purify it. You alone are its owner and master. Subhanallah. We have another caller on the line. Assalamu alaikum. I've been going through some problem recently in my life. People I know have reached heights of success while I think I'm wasting my life. This has caused me fall into a pit of despair and jealousy. Please guide me how to get out of this slump. Jazakallah khair. Dr. Haifa, if you could please answer this question. Dear child, think of it this way. When a patient has a wound on their body, the first step that is taken is to cleanse the wound. As you start giving yourself the attention you need, all the bad feelings and thoughts will go away because you'll be busy with yourself. That's such an interesting example. Indeed, the body doesn't get healed before the harmful substance is removed. We have a caller on the line. Assalamu alaikum. I'm calling from Florida. I would like to ask what is the first and foremost step to beginning Tazkiyah. You have talked a lot about how the process works, but how do we know that we have begun this journey of self-evaluation? Ustaza Taimia, if you would please answer this question. That is a very good question. The first and foremost step to beginning Tazkiyah is to work on your niyyah. So always revisit your intentions when it comes to your Tazkiyah. Inshallah, you'll always endure. Ustaza Taimia, if you could please share some azkar that can help us achieve Tazkiyah. There are many du'as in the Holy Quran that various prophets recited, which can be used to solidify our connection with our Creator. For instance, Allahumma ya muqallibul qulubi sarrif qalbi ala dinik, or ya musarriful qulubi sarrif qalbi ala tu'atik. Thank you. Barakallahu feekum. Indeed, we have learned a lot today from our honorable guest. Tazkiyah seems to be a difficult journey when looking at it from a personal point of view, but Allah will make it easy for us, inshallah. Indeed, that is true. Once a moment is on the path of Hidayah, there is no stopping him or her from reaching Allah. With these beautiful words, we would like to bring our discussion to a close. Jazakallah khair to our esteemed guests and panelists for joining us today and shedding light on this important topic for all of us. Now, ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce our chief guest, Mr. Kaisar Khan. Mr. Kaisar Khan Katak is currently Director General Environment in CDA. He is a civil servant who has many important positions in his career, including Additional Commissioner, Islamabad, Home Secretary, Islamabad, Secretary, Agriculture, Islamabad, and Commissioner Social Security, Islamabad. We welcome you, sir, to kindly come and share your thoughts. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला मुझे अपने रास्ते पे चलने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ आने से पहले कुछ 2 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था। उससे पहले मैंने इस जगह का सिर्फ नाम सुना था, और 2 दिन पहले आने का, यहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का
नतीजा ये है कि आज मैं दोबारा यहाँ पर हूँ। और फिर भी कभी कोई फंक्शन होगा तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग नहीं बुलाएंगे तो मैं खुद रिक्वेस्ट करके आ जाया करूँगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं आपके टीचर्स से भी ये बात कर रहा था कि इंसान हर वो काम पसंद करता है जो वो ख़ुद करना चाहता है, बड़ी शिद्दत से करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। तो जब कोई वही काम कोई और इंसान कर रहा हो तो दिल से उस इंसान की इज़्ज़त और एहतराम में जो है इंसान डूब जाता है, उसको दिल से पसंद करता है, क्योंकि वो ख़ुद उसके दिल की आवाज़ है कि ये काम किया जाए। तो अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को ये तौफ़ीक दी है और आप लोग ये काम इतनी अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो हमारी दुआएं और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। और उसके अलावा अगर किसी भी स्टेज पे ज़िंदगी की हमारी मदद आपको दरकार होगी तो वो पर्सनल एज़ वेल एज़ ऑफिशियल कैपेसिटी में आपके पास हमेशा मौजूद रहेगी। आपको सिर्फ हमें रीच आउट करने की ज़रूरत होगी, सिर्फ हमें इतना बताने की ज़रूरत होगी कि आपको क्या मदद दरकार है, और जो अल्लाह के हुक्म से हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आपकी मदद कर सकेंगे वो हम ज़रूर करेंगे। मैं चेयरमैन CDA जो कि चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं, मैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उन्होंने भी आना था लेकिन चूँकि पोजीशन ऐसी है कि वो इंश्योर नहीं किया जा सकता कि उनकी अवेलेबिलिटी हमेशा सर्टन हो, किसी जगह कमिट करें तो वो आ भी जाएं। उनकी कमिटमेंट भी थी और वो बहुत कीन थे। मैंने उनको पूरी डिटेल से ये सारा कुछ समझाया था कि वो यहाँ पे आएँ, लेकिन उनको लास्ट मोमेंट किसी जगह जाना पड़ गया। तो उनकी तरफ से भी आप सबको मैंने एक तमन्नाएं उनकी कन्वे करता हूँ, और उनका एक वादा भी है कि वो आज नहीं तो कल या परसों वो आएंगे और आपके स्कूल का मुकम्मल विज़िट करेंगे। और उनका कहना ये भी था कि फ़ंक्शन में तो हम जाएंगे, सारी चीज़ें ऑर्केस्ट्रेटेड होती हैं, हम बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं जाके उनके सिस्टम को प्रैक्टिकली ख़ुद देखूंगा, एक एक क्लास में जाऊंगा, अगर वो मुझे इजाज़त देंगे लेके जाएंगे, टीचर्स से मिलूंगा और उनके सिलेबस को अंडरस्टैंड करूंगा। तो उसके लिए इंशाल्लाह विद इन अ डे और टू वो हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ पर लाएंगे। आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो काम आप कर रहे हैं अल्लाह इसमें आपको तरक्की दे, बरकत दे, इसका अजर आपको दे, और मेरी दुआ है कि आप इसको मज़ीद फैलाएं। और जो मैं आपकी जो बानी हैं इस इंस्टीट्यूशन की फ़रद साहिबा का जो मैसेज पढ़ रहा था कि हम किसी पर्टिकुलर सेक्ट को टीच नहीं करते, हम प्योर बेसिक इस्लामिक टीचिंग्स के ऊपर चलते हैं, ये ही प्रॉबेबली आपकी कामयाबी है। इसी के साथ स्टेडफास्टली अगर आप चलेंगे तो किसी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं होंगे और ये काम इसी तरह चलता रहेगा। तो अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। And I'm sorry I forget to appreciate the kids who came up and expressed themselves. This probably is such an achievement on the part of teachers as well as the parents and kids that it is immense, and I cannot express how happy and delighted I am to see these kids expressing themselves. Let me tell you, it is difficult for me even to express myself when I come up to occasion, but these kids are simply marvelous. It's not how they were prepared. It's their body language which was, emanating, which was spreading light, which was so expressive. They were telling everything so eloquently with their body language that they knew what they are saying, and they were saying everything with their heart and soul and body, which was very impressive. Please keep it up. Our next performance is a beautiful Arabic nasheed called Kun Anta. This nasheed has a strong message: be yourself. It tells us not to do things
to look good or show off. Instead, it reminds us how important it is to making our inside beautiful. So let's not wait any longer. A warm welcome to Great 2A to the stage. We hope their performance will encourage with all of us to be ourselves, appreciate our inside beauty and feel happy about being true to who we are. Everyone, enjoy the heartfelt nasheed kun anta. The stage is all yours, 2A. Do you want to make good money? Do stock market. Make good money. Do e-commerce. Make good money. Allah subhanahu wa ta'ala says what? Do charity. Why? Because if you do one good deed for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, you will get 700 in return. So the next time when someone comes and asks, hey, give me some charity, don't put your hands in your pockets and say, no, I don't want to give. No, I can't give because if I give, I'll become poor. No. When someone asks you this, reach into the pockets and give them money. Because Allah subhanahu wa ta'ala gives much, much more. The math adds up. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا
جملا. بكت عيني على As our event comes to a close, let's take a moment to think about the amazing journey we had together, from beautiful performances to thoughtful reflections. Each performance, each part has left a special memory in our hearts. This event wasn't just for entertainment. Indeed, a journey of Tazkiyah, a reminder of the important values that guide our lives. These performances weren't just act. Let's keep these ideas in our minds as we go back to our daily lives. May the things we learned today help us make positive changes. A sincere thank you to our chief guest and all the parents who honor us with their presence today. Your support and encouragement amplify the importance of these performances, extending their influence far beyond the confines of this auditorium. I will end this program with a poem that reflects our theme. In the realm of Tazkiyah, our souls take flight, with skits, nasheeds, and tales shining bright. We acted and we voiced to show the way, purifying our hearts every single day. With laughter and joy, we learn to embrace. Through stories we shared in each heartfelt act, we aim to purify, and that's a fact. So let's hold on tight to lessons we learned in Tazkiyah's embrace. Our spirits have turned. May kindness and light within us ignite, purifying our souls, shining ever so bright. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. My name is Momina Fatima and I'm from grade 4. Today is a special event in our school which is called Annual Day, and the theme is Tazkiyah. Tazkiyah. The meaning of Tazkiyah is pure heart, pure body and pure soul. This is my school, Al-Huda International School, which is an Islamic institute and it teaches people about Islam. There are 5 campuses around the country: Islamabad, Peshawar, Karachi, Faisalabad and Sialkot. Thank you. It was quite overwhelming for us as a parent कि आप लोगों ने इतना अच्छा पूरा एक इस्लामिक, मैं कहूँगा कि एक टॉपिक को आपने लिया and you elaborated it quite well using students, और students काफ़ी ज़्यादा confident थे and we really enjoyed it. तो दुआ यही एज अ पेरेंट कि आप लोग इसी तरीके के साथ कंट्रीब्यूट करते रहें. और आई हैव बीन एसोसिएटेड विद ये एकेडमिक जर्नी फॉर लास्ट 30 years और सो, और इस तरह का हैंड्स ऑन इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहूँगा कि मैंने कोई इवेंट इस तरह का अटेंड किया है.